बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 24 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट टेंस दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस। वी कैन कॉल इट पास्ट सिंपल टेंस. So we will study about the sentence structure and using the past simple tense. In our next lecture we will study about its passive structure, how to change passive active sentences of past simple tense into passive voice in our next lecture. Okay, in this lecture we will just focus on what are the uses and what is the sentence structure about this past simple tense along with examples. Okay, so you are requested to listen this lecture with full concentration. Past indefinite tense, we can call it past simple tense as well. Okay, so in today lecture we will study about the sentence structure and uses of past simple tense active structure. Okay, in our next class, in our next lecture we will study about the passive structure of past simple tense, how to change active sentences of past simple tense into passive voice. So we will study that in our next lecture. आज के लेक्चर में हम सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पेज नंबर 96, 97 एंड 98 में जितने भी एक्सरसाइज अलॉन्ग विद एग्जांपल्स वहाँ से हम थोड़ा कुछ एग्जांपल लेके हम इस टेंस को एक्सप्लेन करेंगे. बाकी मैं इसके जो पीडीएफ फाइल में मैं आप लोगों को सेंड करूँगा नोट्स, जो एक्सरसाइज है पास्ट सिंपल टेंस की उर्दू सेंटेंस, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में उतारनी है और वहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है. ओके, so students, past simple tense, we use past simple tense for those activities which are taken place in past time. Okay, इसके अलावा हमारे पास कुछ सर्टन एक्सप्रेशन है जिसके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ओके, रिसेंटली. इस तरह के एक्सप्रेशन जब सेंटेंस में आ जाए तो वी हैव टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस. ओके, keep this thing in your mind. One in next, past simple tense, I mean past indefinite tense, it is the only tense in which we use second form of the verb. वर्ब की second form हम यूज़ करते हैं. ओके, वर्ब की second form only in assertive sentence में हमारे पास वर्ब की second form हम यूज़ करते हैं. कोई आपसे क्वेश्चन करे कि वो कौन सा टेंस में जिसमें हम वर्ब की second form, that is past simple tense, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में. ओके, इसके बाद जब हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर. ओके, सो वी हैव टू यूज पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट सिंपल टेंस. ओके, फॉर एग्जांपल द पियन rang the bell. Okay, I completed my work. He caught a bird in the bushes. I met a friend in the market. Meet, met. Okay, she worked in a factory. worked. इसमें रेगुलर वर्ब भी आ सकते हैं और इरेगुलर वर्ब भी आ सकते हैं. ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म. नाउ द फर्स्ट वन, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट plus verb second form plus object. For example, she wrote a story. She wrote, written. So wrote is the second form. She wrote a story. He bought a new shirt yesterday. Buy, bought. He bought a new shirt yesterday. And I took my breakfast recently. I took, taken. Okay, take dinner, take breakfast, take a bath. ओके, टेक डिनर, इस तरह की एक्सप्रेशन के साथ हम टेक यूज़ करते हैं. ओके, अगर आप लोग बुक खोल ले पेज नंबर 96, तो 96 में हमारे पास जो उर्दू एग्जांपल है वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल. तुमने सवाल किया, यू सॉल्व, तुमने सवाल हल किया, यू सॉल्व द क्वेश्चन. इस तरह मैंने एक कैमरा ख़रीदा, आई बॉट अ कैमरा. इस तरह के उर्दू सेंटेंस जब आ जाए दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके, या उसने वालिदैन का हुक्म नहीं माना, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स. सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस
can be given in past simple tense. Okay, now the next one, that is negative sentence. स्टूडेंट्स सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया आप लोगों की पेपर में, नोटबुक्स में, जब आप लोग टेंस की प्रैक्टिस करते एक्टिव पैसिव वॉइस, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जब आप लोग पास, यू पीपल गेट कंफ्यूज इन द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास सिंपल टेंस। मैंने आप लोगों को बताया कि पास सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बट when it comes to negative sentence, तो negative sentence में we use the helping verb did not. देखिए याद रखें, do not and does not can be used in present and definite tense, but past and definite tense में आपने एक ही helping verb यूज करनी है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल प्रोनाउन के साथ वी हैव टू यूज did not. Okay, but one thing important, keep this thing in your mind, and you people commit this mistake, this is a very common mistake, कि पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव सेंटेंस में डेड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डेड डू का सेकंड फॉर्म है, तो डेड डू डेड डन, तो डेड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर, आई डेड नॉट राइट अ लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। you have to, after using did not in negative sentence, you have to use first form of the verb. For example, they won the match yesterday, they did not win the match yesterday, did not के बाद verb की first form। the principal distributed the prizes among students, so the principal did not distribute the prizes among students। okay, the police did not arrest the criminal, डेड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव में आप चेंज करें, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, कि वर्ब पास्ट सिंपल टेंस की नेगेटिव सेंटेंस डेड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप लोग पेपर में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो अभी जो जिस स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं देख रहा था, फिर से आप लोगों ने डेड नॉट के बाद वर्ब की second form use की है। so be careful about this thing, you have to use first form of the verb after using did not। okay, now interrogative sentence। okay, interrogative sentence सवालिया जुमले। okay, so interrogative sentence में what you have to do, you have to put the helping verb did at the start of sentence के start में और verb की first form। for example, did you complete your project, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, येस आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड सारा पार्टिसिपेट इन स्पीच कंपटीशन लास्ट ईयर, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपेट पार्टिसिपेटेड। ओके, डिड द पीएन रिंग द बेल, अगर हम इसको असर्टिव में कर ले तो ये आएगा द पीएन rang the bell, rang, okay। so did the pen ring the bell, ring the first form। अगर हम assertive में करें जिस तरह मैंने बताया, the pen rang the bell। okay, so this is the structure of interrogative sentence। okay students, so it was all about past simple tense. In today lecture we came to know about the sentence structure of past indefinite tense or past simple tense। okay, you can call it past simple tense or past indefinite tense, both are correct। okay, so I would like to revise once again that in past simple tense we have to use second form of the verb, but in negative sentence we have to use the helping verb did not, and after using did not we have to use first form of the verb। and similarly in interrogative sentence you have to put the helping verb did before the subject for making interrogative sentence। so I hope you understand what I am saying। so this is a very important tense, most of the students they get confused while using when they translate or when they change active sentence into passive, so they get and they commit mistake in this tense, especially in this tense। okay, so आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें एंड राइट डाउन एक्सरसाइज ऑन योर इन योर नोटबुक्स। आप लोग अपनी नोटबुक्स में वो लिख दे, जो इस लेक्चर के साथ जो फाइल मैंने सेंड किया आप लोग वहाँ से
उसको आप लोग बेहतर ये कि आप लोग प्रिंट निकाल के उसको अपनी फाइल में लगाए और वहाँ से कुछ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक्स पे भी उतार रहे हो, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, इस टेंस की प्रैक्टिस करें. So in our next lecture we will study about the passive structure of this tense. So it's enough for today. See you in next lecture. Allah Hafiz.